We were talking about N-channel MOSFET, also called NMOS transistor, and we established कि किस तरह से आप उसमें channel develop करते हैं by applying a positive VGS, and VGS needs to be greater than VT to get a channel. So if VGS is less than VT, you don't have a channel, you don't have any mechanism for current flow from drain to source. But once you have a channel, when VGS is greater than this threshold voltage VT, you get a channel. And as soon as you apply this VDS across the channel, you get a flow of electrons from source to drain, and hence the current is flowing in the opposite direction, that is from drain to source, into the drain, out of the source. So let's first discuss the case where VDS is small. So if VDS is small, so that means कि इस एंड पे देखिए चैनल के इस एंड के ऊपर जो वोल्टेज अपीयर हो रही है across the channel, it is VGS, and hence the effective voltage is VGS minus VT, which determines the depth of the channel at the source end. At the drain end, the depth of the channel is determined by VGD minus VT. So drain end पे आप देखें तो VGD is the voltage at this location. So drain end के ऊपर you get VGD voltage across the channel, and the effective voltage would be VGD minus VT. So we are saying that for the moment VD is very small and VD is almost approaching to zero. So what this means is that VGD, which can be written as VG minus VT, is almost equal to VG, and since Vs is equal to 0, so this is almost equal to VGS. So currently जो हम case consider करना चाह रहे हैं, where you apply a small VDS, it is equivalent to saying that the channel is of uniform depth. So channel source end पे भी same depth का है और drain end के ऊपर भी same depth का है. So अभी हम uniform depth channel को पहले हम consider करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद more generic case देखेंगे जिसमें depth will be different at the source end rather than the tapered rather than the drain end, and we'll say that the channel is tapered now. So depth will be smaller at the drain end relative to that at the source end when VDS is not small. So this is called a tapered channel. For the moment, let's first work on the uniform channel. Uniform depth channel पे पहले काम कर लेते हैं और उसके बाद more generic case tapered channel का consider कर लेते हैं. So let's see कि आप किस तरीके से ID को calculate कर सकते हैं. So since VDS is small, the voltage between the gate and the various points along the channel is almost constant, and as a consequence the channel depth along the length of the channel remains the same. So we have already established that this ये relation हम लिख सकते हैं for the charge. For the magnitude of charge we have CV, where C is C oxide WL, this is CV, this is C, the capacitance, because C oxide is the capacitance per unit area, W times L is the area. The voltage that matters here is VOV. So across the length of the channel, at the source end and at the drain end and in the middle points, everywhere we have VOV across the channel. So average value is VOV, तो वो यहाँ पर हमने substitute कर दी. चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखा जा सकता है अगर आप लेंथ को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लें, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज C oxide W VOV, and the voltage VDS can be related to the electric field. So voltage को electric field से आप basic definition की मदद से relate कर सकते हैं, which is V is this line integral of E dot dl. So here आपने जो electric field appear हो रही है वो across the length appear हो रही है. So E magnitude is equal to VDS divided by the length of the channel. Note करें यहाँ पर हम हर जगह magnitudes की बात कर रहे हैं. We are talking about just magnitudes because we already know the direction of ID. Since electrons are traveling from source to drain, the direction of ID is from drain to source. So drift, electron drift velocity can be defined as mu n times this electric field,
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज VDS divided by L. So now we can write the current. So current can be written as ID, since ID is equal to dq divided by dt, or it can be written by chain rule as dq by dx, dx by dt, with dq by dx is charge per unit length, charge per unit length, dx by dt is the velocity, electron drift velocity, because here we are talking about the drift current. So drift ka mechanism, and the influence of electric field, charges are moving. So we are talking about electron drift velocity here. So let's make the substitution. जो चीज़ें हमने यहाँ पर डिटरमिन की हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ को सब्सटीट्यूट कर दें, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दें, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वी गेट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द ड्रेन करंट. So ID is mu n C oxide W by L VOV times VDS. So VOV is VGS minus VT. VOV आप recall करें, VOV is called the effective voltage or the overdrive voltage, and is basically the excess of VGS over VT. VT से आप कितना ऊपर है, so that will indicate VOV. So we can say that कि यहाँ पर depending on the selected value of VGS, you can implement a variable resistor using this expression. VGS को आप change करेंगे तो ये sort of Ohm's law की expression है. So VGS को जब आप change करेंगे तो आप ID divided by VDS को अपनी मर्जी का implement कर सकते हैं. So you can implement a variable resistor based on this expression, as long as the channel stays uniform. जब चैनल यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो फिर एग्जैक्टली आप इसको लीनियर रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते. So this is the expression that we have determined, and we can represent it as a variable resistor. ये टर्म जो है mu n C oxide, इसको sometimes we denote it as Kn prime. So mu n C oxide, where Kn prime is called the process transconductance parameter. Process transconductance parameter. Why? अभी हम later on देखेंगे कि transconductance is proportional to this entity Kn prime. So that's why we call it a process transconductance parameter. So process transconductance parameter, and is expressed in amperes per volt square. W by L is the transistor aspect ratio. So width of the transistor divided by width of the channel divided by length of the channel is called the transistor aspect ratio, and is a dimensionless quantity. W is the width of the channel and L is the length of the channel. So ये आपका process transconductance parameter है. W is the width of the channel, length L is the length of the channel. So this is called process transconductance parameter Kn prime. Also we define Kn, which is called MOSFET transconductance parameter, and is defined as Kn prime W by L. So process transconductance parameter multiplied with transistor aspect ratio is called MOSFET transconductance parameter. Transconductance parameter. So यहाँ पर note करें Kn, the MOSFET transconductance parameter, also depends on that specific device dimensions. However, the process transconductance parameter Kn prime is only dependent on the process. So क्या electron mobility उस process में achieve हुई है mu n, and क्या capacitance per unit area थी of the oxide layer that was developed during the process. So given fabrication process is often characterized by the minimum channel length achievable, L min. So अगर आपको बताया जाए कि ये इंटेल का प्रोसेसर है जिसको 90 नैनोमीटर प्रोसेस से बनाया गया है, तो दैट वुड मीन कि 90 नैनोमीटर प्रोसेस मीन्स कि उसमें जो मिनिमम डायमेंशन L है जो अचीवेबल है in that fabrication process is 90 nanometer. So the channel length is the minimum dimension achievable in the given manufacturing process will characterize that process. So a 90 nanometer process means the minimum channel length that can be achieved by that process is 90 nanometers.
MOSFET ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर को हम डिफाइन करते हैं एज Kn and is defined as Kn prime W by L, where Kn prime is mu n C oxide. So Kn and Kn prime both are expressed in ampere per volt square, and W by L is a dimensionless quantity. So ये बात हमने ऑलरेडी की है कि एज अ वेरिएबल रेजिस्टर डिपेंडिंग ऑन कि आप VGS की क्या वैल्यू रखते हैं, VGS को चेंज करने से सॉर्ट ऑफ अ वेरिएबल रेजिस्टर इंप्लीमेंट किया जा सकता है यूजिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक वेयर दिस where VDS is kept very small. So as long as the channel depth is uniform, we can implement sort of a variable resistor by using the MOSFET characteristics. So let's see what happens when the channel is not uniform. What will happen when the channel is not uniform depth? When VDS is increased. अभी का केस हमने ये देखा था कि हमने कहा हमने deliberately VDS को significantly small रखा और हमारा target ये था कि channel depth, we like to keep channel depth uniform at both the drain and the source length, source end. Source end पे भी हम चाह रहे थे कि channel depth वही हो जो drain end पे. So that is achievable by keeping VDS small. What if we increase that VDS? What will happen when we increase that VDS? So when we increase that VDS, the effective voltage at the source end is VGS minus VT, and the effective voltage at the drain end is VGT minus VT. So since now VDS is not negligibly small, so this will be smaller. So effective voltage at the drain end will be smaller. So smaller number of electrons will be collected underneath the gate electrode at the drain end relative to the source end. So source end पे ज़्यादा channel depth achieve होगी, while drain end के ऊपर smaller depth will be achieved because drain end के ऊपर effective voltage is smaller. So as a consequence, the channel is not of uniform depth. Instead, the channel is tapered. तो अब चैनल टेपर्ड हो गया, अब चैनल यूनिफॉर्म डेप्थ का नहीं रहा. इस एंड के ऊपर ड्रेन एंड के ऊपर चैनल डेप्थ इज स्मॉलर, सोर्स एंड के ऊपर चैनल डेप्थ इज लार्जर. So the channel is now tapered. Instead of having a uniform channel, we now have a tapered channel. So again, to develop the relation for the drain current ID, we will use the similar procedure as before. लेकिन पहले हमने यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव वोल्टेज VOV यूज की थी पिछले केस में. अब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे. ये देखिए वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है. इस एंड के ऊपर डिफरेंट एवरेज वैल्यू इफेक्टिव वोल्टेज की, इस एंड के ऊपर different value effective voltage की. So the average value is in between these two numbers. So let's determine the average value and apply the same procedure as before to determine an expression for the drain current ID. So main message यहाँ पर ये है कि आप channel is now tapered because the effective voltage at the drain end is smaller than the value of the effective voltage at the source end. सो चैनल इज नॉट टेपर्ड. इस एंड पे देखिए, इस एंड पे आपके पास इफेक्टिव वोल्टेज VOV है, VGS माइनस VT. सो VOV इज द इफेक्टिव वोल्टेज. इस एंड पे देखिए, इस एंड पे इफेक्टिव वोल्टेज इज, यहाँ पर देखिए जरा ग्राफिकली, ये VOV है और इसको हम कह रहे हैं VDS है. सो कैन यू टेल द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट दिस पॉइंट? या ये क्या लें, ये क्या लिखें इस वैल्यू को, इफेक्टिव वोल्टेज क्या लिखें VOV और VDS की टर्म्स में? जी ग्राफिकली आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली यहाँ पर VOV माइनस VDS है. सो हम ये कह रहे हैं कि एक सोर्स एंड के ऊपर VOV थी इफेक्टिव वोल्टेज और ड्रेन एंड के ऊपर वो VOV माइनस VDS है. वी वुड लाइक टू हैव द एवरेज वैल्यू. तो एवरेज के लिए एक सिंपल तरीका ये है कि आप इसको इंटीग्रेट कर लें, और उससे भी आसान तरीका ये है कि उसको ग्राफिकली ऑब्जर्व कर लें. ये देखिए इंटीग्रेशन इज जस्ट एरिया अंडर द कर्व. इफ आई ड्रॉ दिस रेड लाइन, तो कैन यू सी कि एरिया इज स्टिल द सेम. क्योंकि मैंने क्या किया, अगर मैं ये रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आई हैव जस्ट, ये एरिया मैंने यहाँ से उठाया
और इस जगह पे शिफ्ट कर दिए। सो व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट हियर इज कि ये जो मैंने रेड ब्लॉक यहाँ पर ड्रॉ किए, this has the same area as the given tapered curve. So this curve has the same area as the given tapered curve. So क्या आप ये चीज देख सकते हैं? देखिए ये एरिया भी वही है जो कि गिवन था, राइट? सो हमने इंटीग्रेशन करनी है, हमने एवरेज वैल्यू निकाली है। सो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस कर्व? सो ये आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या आ रही है वैल्यू। सो दिस इज VOV minus half VDS। जी जरा देखिए, क्या आप एग्री करते हैं कि VOV एवरेज फॉर दिस प्रॉब्लम इज VOV माइनस हाफ VDS? और हमने किस तरह निकाला है? हमने एरिया अंडर द कर्व को मैनिपुलेट किए। हमने क्या कि इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन, डूइंग इंटीग्रेशन, वी कैन जस्ट टेक अ लुक हेयर एंड जस्ट इस एरिया को आप उठाएं और इस एरिया को शिफ्ट करके इस जगह पे रख दें। सो जो रिजल्टिंग आपके पास यूनिफॉर्म टेपर है, एक्चुअली इट इज नॉट द सेम एज द गिवन प्रॉब्लम, बट द एरिया इज स्टिल द सेम। सो अगर हम इस रिजल्टिंग यूनिफॉर्म टेपर की एवरेज वैल्यू निकाल लें, जो कि सेम एट अलोंग द लेंथ, एंड द वैल्यू इज VOV माइनस हाफ VDS, so it is the same average value as that of the given tapered curve, as that of the given tapered channel। जी जरा देखिए, ये ठीक लग रहा है? Yes, sir. सो अब आपके पास ये एवरेज वैल्यू आ गई है। नाउ वी कैन रिपीट द सेम प्रोसीजर, वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस न्यू एवरेज वैल्यू। सो द प्रोसीजर इज स्टिल द सेम एज बिफोर। हमने जस्ट ये करना है कि वही सेम प्रोसीजर हम रिपीट करते हैं। उसी तरह ड्रिफ्ट करंट की एक्सप्रेशन लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और चार्ज की टर्म्स में, एंड जस्ट वहाँ पर जो VOV पहले हमने सिंपल VOV सब्सटीट्यूट किया था, उसकी जगह अब आपने VOV माइनस हाफ VDS सब्सटीट्यूट करना है। So let's make this substitution and get the final expression. So what we are saying here is, ये भी इस कैरेक्टरिस्टिक के भी इस पे वापस आते हैं, इस पे डिटेल में भी बात करते हैं। So we are saying कि we are using the same expression as before. ID is equal to charge per unit channel length times electron drift velocity. So electron drift velocity here is mu n times electric field, and it is still the same as before क्योंकि electric field across the channel is still due to the voltage VDS and the length of the channel is still capital L, so it is mu n VDS divided by capital L। जो चेंज हमने करनी है चार्ज पर यूनिट लेंथ की एक्सप्रेशन है, उसमें हमने चेंज लानी है, और उसमें जो पहले आप जस्ट VOV यूज कर रहे थे, अब आपने VOV माइनस हाफ VDS यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। सो ID इज mu n C ऑक्साइड W/L VOV माइनस हाफ VDS टाइम्स VDS। सो पिछले केस में जब VDS वाज वेरी स्मॉल, हमने यहाँ पर जस्ट VOV यूज किया था। अब उसकी जगह करंट एवरेज वैल्यू हमने यूज कर ली है VOV माइनस हाफ VDS। So this is the expression when the channel is tapered. When the channel is tapered. यूनिफॉर्म के लिए अलग एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म के केस में आप इसी से यूनिफॉर्म की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। When VDS is very small and is approaching to 0, so VOV minus half VDS is almost equal to VOV, and you get the resulting expression जो कि अभी पिछले केस में हमने डिराइव की थी। So this is the generic case that can cater for a uniform channel as well as a tapered channel. So this generic expression can cater for a uniform channel as well as a tapered channel. So when the channel is uniform or tapered, we call that mode of operation the triode mode. उसको हम triode कहते हैं। MOSFET के केस में when you find out that the channel is either uniform or tapered, so that mode is called triode mode, and this is called triode, and the mathematical condition for the triode mode is triode VDS must be less than or equal to VOV. When VDS exceeds VOV, you get another mode of operation which is called saturation. So saturation implies VDS is greater than or equal to VOV। और चैनल के साथ क्या होता है? इस केस में चैनल के साथ ये होगा कि द चैनल इज पिंच्ड ऑफ।
When the channel depth is reduced to 0, we say that the channel is pinched off. Let's see कि इसका क्या meaning है. Let's consider the case VDS equal to VOV first, and then we'll see कि VDS greater than VOV के case में आपके पास क्या आता है. So let's summarize this. We have three modes of operation possible for a MOSFET. The first mode of operation is cutoff, and cutoff means you don't have a channel. So VGS is less than VT. When VGS is less than the threshold voltage VT, you don't have a channel. Channel does not exist. So there is no mechanism for current flow between drain and source. And we say that the device is cut off. When you have a channel, so this means no channel exists. When you have a channel, then mathematically you say that VGS is greater than or equal to VT. So you have enough VGS so that you get a collection of electrons underneath the gate terminal. So that means the channel exists. If the channel exists, you have two possibilities. The first one is called triode. The second one is called saturation. Triode means the channel is either uniform depth or tapered. दोनों cases triode में हम cover करते हैं. So triode means channel is either a uniform or tapered. So mathematically that means VDS has to be less than VOV, because when VDS becomes equal to VOV, the channel depth at the drain end will reduce to 0. And VDS is equal to VOV, so channel depth will reduce to 0 because there is not enough effective voltage available at the drain end to get a collection of electrons at the drain end of the channel. Saturation means the channel is pinched off. Pinched off का क्या मतलब है कि drain end के ऊपर channel depth has reduced to 0. So drain end के ऊपर channel depth has reduced to 0. That is called saturation. And mathematical condition is VDS needs to be greater than or equal to VOV. Again, VOV is VGS minus VT. Excess of VGS over VT is called VOV, the overdrive voltage or the effective voltage. तो अभी तक हमने ट्रायोड का केस कवर किए और ट्रायोड के लिए हमने एक एक्सप्रेशन भी निकाल ली है कि ID is Kn prime W by L VOV minus half VDS times VDS. So this is the case that we have covered, triode. Let's take a look at what happens when VDS becomes equal to VOV. So let's consider the case जिस mode को हम कहते हैं saturation and is defined by VDS is greater than or equal to VOV. So ये again figure देखिए, यहाँ पर अब आप देखें इस end के ऊपर effective voltage क्या है आपके पास VOV. So VOV is determining the depth at this end. When VDS becomes equal to VOV, तो अब इस end पे देखिए VDS has become equal to VOV. तो क्या आपके पास बची है कोई इफेक्टिव वोल्टेज? आपके पास नहीं बची इफेक्टिव वोल्टेज, राइट? बिकॉज इफेक्टिव वोल्टेज एट दिस एंड वाज effective voltage at this end was VGD minus VT, which can be written as VGS minus VDS minus VT. So VGS minus VT minus VDS. So आप ये कह रहे हैं कि VDS is now equal to VOV, but VOV is equal to VGS minus VT. So as a consequence, you have 0 volt. So the effective voltage at the drain end is now 0. So that means the channel is fully pinched off. There is no effective voltage available at the drain end, which can enable accumulation of electrons at the drain end. So the channel is pinched off. We call this a pinched off channel. So we get a pinched off channel. So what do you expect? ये तो ठीक हो गया आपका बिल्कुल ड्रेन एंड के ऊपर जो है पिंच ऑफ पॉइंट आ गया. What do you expect अगर VDS को हम ग्रेटर देन VOV करते हैं तो what do you expect? What will happen to this pinch of point? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या जहन में आता है? अगर VDS को हम एक्सीड कर दें बियॉन्ड VOV, what will you expect? इस पिंच ऑफ पॉइंट के साथ क्या होना चाहिए?
Will the pinch of point move left or right, or will it stay at this position? What will happen to the pinch of point if VDS is increased beyond VOV? Sir, it will move to left. It will move to left. Why? What does that mean? It means कि पहले कोई pinch of point आपका early achieve हो जाएगा इस केस में. So you get the pinch of point, move towards left. So this is what you get. So ये pinch of point आपका move हो गया left की तरफ. So what we are saying is कि now the pinch of point has moved towards left. Slightly left की तरफ move हो गया. इधर हमने थोड़ा सा exaggerated इसे show किया है, but it will move slightly towards left. And now आपके पास इस तरह की situation है. So now the basic question is कि क्या still you will have a current flow? क्या ID still आपको मिलेगा? Will you get a current flow still or not? So to answer this question, वही सेम मैकेनिज्म रिकॉल करें जो कि सीबीजे के केस में, बीजेटी में जो हम स्टडी करते थे सीबीजे के केस में, कि सीबीजे ऑल्दो सीबीजे इज रिवर्स बायस्ड बट द करंट कैन फ्लो बिकॉज बेस में हम माइनॉरिटी कैरियर्स इंट्रोड्यूस करते थे और हम कहते थे कि माइनॉरिटी कैरियर्स कैन इजीली फ्लो अक्रॉस अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. उनके क्रॉस रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है सीबीजे रिवर्स बाय सीबीजे वो मेजॉरिटी कैरियर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. सो बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल व्हाट डू यू थिंक, अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए हैं तो ये पहले तो ये बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन्स इस सबस्ट्रेट में पी टाइप सबस्ट्रेट है अगर आप रिकॉल करें, आर दीज इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ एक्यूमुलेट किए हैं आर दीज माइनॉरिटी कैरियर्स और मेजॉरिटी कैरियर्स? सर माइनॉरिटी कैरियर्स. ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं. तो वो सेम मैकेनिज्म जो सीबीजे के केस में हमने कहा था कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परफेक्टली अलाइंड एंड विल ड्रिफ्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स and form the drain current. So what I'm emphasizing here is although the pinch off point has shifted towards left, but that will not that will still enable the flow of the drain current because यहाँ पर ये जो reverse biased PN junction है formed between P type substrate and N type drain is उसके across जो electric field develop हो रही है that still which is VDB, the drain to body voltage, is still enabling these electrons to move into the drain, forming the drain current. So when VDS is greater than VOV, the pinch off point has shifted towards left, but the drain current is still there, and we will get a positive drain current flow across the channel. So let's determine the relation here. So यहाँ पर रिलेशन को डिटरमिन करने के लिए जो पिछली रिलेशन अभी हमने एस्टेब्लिश की है उसी को रेडिली यूज किया जा सकता है. वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट VDS इक्वल टू VOV. सो VDS इक्वल टू VOV को हम यहाँ पर जस्ट पुट इन कर देते हैं एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वी गेट ID इज इक्वल टू KN प्राइम W by L VOV minus half VOV times VOV, or we have Kn prime W by L half VOV square, or we have half Kn prime W by L VGS minus VT squared. So this is the expression that is valid for the saturation mode of operation. So this is the expression that we are going to use for saturation mode of operation. ID is equal to half Kn prime W by L VGS minus VT square. So let's summarize कि अभी तक हमने क्या किया है. अभी तक हमने क्या है कि आपके पास n channel MOSFET है, n channel MOSFET also called NMOS transistor. There are three modes possible. No channel का केस है जिसमें channel is you don't have a channel, so no channel implies cut off mode,
and mathematically it means VGS is less than VT. When you get a channel, VGS is greater than or equal to VT, you have a channel, you have two possibilities. Either you can have triode mode of operation or you can have saturation mode of operation. So triode mode of operation means the channel is either uniform depth or tapered. So ये दोनों cases triode के अंडर cover होते हैं. So mathematically this means VDS is less than VOV. Saturation means the channel is pinched off. Pinched off channel means channel depth has reduced to zero at the drain end. Mathematically that means VDS needs to be greater than or equal to VOV. जो रिलेशन है सैचुरेशन के लिए इट इज ID इज इक्वल टू हाफ KN प्राइम W/L VOV स्क्वायर्ड. ट्रायोड के लिए जो रिलेशन है आपके पास वो है ID इज इक्वल टू KN प्राइम W/L VOV माइनस हाफ VDS टाइम्स VDS. रिकॉल करें ये एवरेज वैल्यू हमने निकाली थी VOV माइनस हाफ VDS. सो दिस इज व्हाट वी हैव. ये तीन मोड्स हैं जो कि चैनल मॉसफेट में एग्जिस्ट करते हैं. यू कैन ईदर हैव कट ऑफ, ट्रायोड और सैचुरेशन डिपेंडिंग ऑन के VGS की क्या सिचुएशन है एंड VDS की क्या सिचुएशन है. तो इन दोनों को ये इनइक्वालिटी आपको आप देखते हैं और ये इनइक्वालिटी देखते हैं एंड देन यू डिसाइड वेदर यू हैव सैचुरेशन मोड और ट्रायोड मोड और कट ऑफ मोड. So let's extend these ideas to a p-channel MOSFET. अभी तक n-channel MOSFET की बात की है. Let's take a look कि p-channel MOSFET में किस तरह से changes आएंगे. So p-channel MOSFET is a dual device. So the duality की basis पे we can readily see things कि वो कैसे होंगी. So n-channel MOSFET में you start with a p-type substrate. You do the doping and make two n+ regions. एक को सोर्स कह देते थे, एक को ड्रेन कह देते थे. इन कॉन्ट्रास्ट पी चैनल मॉसफेट में स्टार्ट विद एन टाइप सबस्ट्रेट. यू क्रिएट टू P+ regions. One of them is called the source, the other one is called the drain. In between the two regions you deposit silicon dioxide. आप ग्रो करेंगे, उसके और मेटलाइजेशन करेंगे and you have the gate terminal. Also you have a body terminal. So again undesired PN junctions यहाँ बन रहे हैं. With this polarity, we like to make sure that these two undesired PN junctions always stay reverse biased. So we connect the source and the body terminal together and let's use them as a reference. And we always make sure that VDS is always less than or equal to 0. यानी VDS यहाँ तो 0 होगी या वो negative होगी. So then this PN junction will also be reverse biased. VGS आपको क्या अप्लाई करनी पड़ेगी. देखिए यहाँ पर n टाइप सबस्ट्रेट है. सो n टाइप सबस्ट्रेट हैज अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मींस इलेक्ट्रॉन्स को आपने रिपेल करना है. सो VGS हैज टू बी नेगेटिव, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर पाएंगे. तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना है और फिर मजीद VGS को मजीद नेगेटिव करना है until you attract some holes from these neighboring regions and accumulate them underneath the gate terminal to form a P channel. So the idea is similar as before, लेकिन यहाँ पर एक negative VGS चाहिए ताकि पहले आप depletion region create करें by pushing the electrons present in this n-type substrate and then you attract holes from the neighboring drain and source regions and accumulate them underneath the gate terminal to get a p-type channel. So when you have a p-type channel, then you apply a negative voltage, a negative VDS, so that holes start to flow from source to drain, and since holes are positive you get a current from source to drain as well. So यहाँ पर नोट करें based on the duality principle तमाम regions की polarity opposite है. यहाँ पर n type का substrate है instead of having a p type substrate in an NMOS transistor. यहाँ पर p type का drain और source है n channel MOSFET में, n type का drain और source हुआ करता था. p type का channel है n channel MOSFET में, n type का channel था. VGS पॉजिटिव थी NMOS ट्रांजिस्टर में, PMOS ट्रांजिस्टर में VGS नेगेटिव है. VDS पॉजिटिव थी NMOS ट्रांजिस्टर में, PMOS ट्रांजिस्टर में VDS नेगेटिव है. PMOS transistor में current is flowing from source to drain
NMOS transistor में current was flowing from drain to source. So all regions polarity, all currents polarity, all voltage polarities are opposite of that of NMOS transistor. So NMOS transistor के साथ अगर आप compare करें तो तमाम regions की polarities opposite हैं, तमाम currents की polarities opposite हैं और तमाम voltages की polarities भी आप opposite देख सकते हैं. सो प्रिंसिपल आइडिया सिमिलर है, उसे सिमिलर तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन भी किए लेकिन तमाम पोलैरिटीज़ जो हैं ऑपोजिट है एंड वी विल यूज़ दिस फैक्ट टू डेवलप द इक्वेशंस टू एक्सटेंड द आइडिया ऑफ एन चैनल मॉसफेट के लिए जो भी हमने वर्किंग की है, जो इक्वेशंस निकाली हैं उनको रेडिली हम अभी डेवलप करेंगे और पी मॉस ट्रांजिस्टर के लिए हम लिख सकेंगे. जस्ट हमने ख्याल ये रखना है कि तमाम करंट्स की पोलैरिटीज़ ऑपोजिट है और तमाम वोल्टेजेस की पोलैरिटीज़ opposite for a PMOS transistor. So NMOS and PMOS transistors together are called complementary devices, and if the process allows fabrication of both NMOS and PMOS transistors, we call that CMOS process or CMOS technology. So nowadays CMOS is quite popular. So CMOS का just मतलब ये है, CMOS is complementary MOS, and it just means के वो जो process है it allows the fabrication of both NMOS and PMOS transistor on the same wafer. So how do we do that? ये कैसे possible है, आप कैसे करते हैं ये चीज़? Let me get back to. So how is that possible? देखिए आपके पास NMOS ट्रांजिस्टर में you require a p-type substrate, PMOS transistor में you require an n-type substrate. So how do we create both the devices on the same wafer, on the same substrate? So for that purpose we require an additional n-well process. So what we do is p-type, we start with the p-type substrate, we create NMOS transistors directly in that p-type substrate. उसमें n प्लस डोपिंग करेंगे, दो सोर्स और ड्रेन रीजन्स आप क्रिएट कर लेंगे, बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर ग्रो करेंगे और मेटलाइजेशन करके गेट टर्मिनल बना लेंगे. सो यू गेट NMOS ट्रांजिस्टर. जब आपने PMOS ट्रांजिस्टर बनाना है तो उसमें एक एडिशनल स्टेप आप करेंगे. पहले आप डोपिंग करके एक n-well, एक n टाइप का रीजन क्रिएट करेंगे विच वी कॉल n-well, और उस n-well में फिर आप PMOS ट्रांजिस्टर को ग्रो करेंगे by creating two P plus regions, one called the drain, the other called the source, and then you grow silicon dioxide layer in between the two regions, you do the metallization and have the gate terminal and hence implement a PMOS transistor. So this is called n-well process, और इसमें एक additional आप n type का region पहले create करते हैं और फिर PMOS transistor को grow करते हैं. NMOS transistor can be grown directly in the p-type substrate. So overall this process is called CMOS technology. So CMOS technology enables or complementary MOS. So CMOS technology enables us to have both types of transistors on the same wafer. So PMOS transistor के लिए भी आप process transconductance parameter define कर सकते हैं, which is denoted by Kp prime, and Kp prime is mu p times C oxide. So C oxide तो अभी भी वही है क्योंकि सेम प्रोसेस में अगर CMOS प्रोसेस है तो जहाँ पर भी आपने ऑक्साइड ग्रो की है उसके साथ एसोसिएटेड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया आपको एक गिवन रेंज में मिल जाएगी मैन्युफैक्चरर से. म्यू पी इज द मोबिलिटी ऑफ द होल्स. होल्स आर लेस मोबाइल relative to the electrons, and typically mu p is 1 by 4 mu n to half mu n. So typically mu p, the electron mobility is smaller than mu p, the whole mobility is smaller than the electron mobility, and typically वो इस रेंज में आपको मिलती है and is dependent on the process. Transistor transconductance parameter को again can be defined in a similar way. So transistor transconductance parameter is Kp, which is equal to process transconductance parameter Kp prime times the aspect ratio W by L. So this is the MOSFET transconductance parameter or the transistor transconductance parameter for a p-, 'PMOS transistor. 'PMOS transistor' के लिए भी आप process transconductance parameter define कर सकते हैं, which is denoted by Kp prime, which is equal to process transconductance parameter Kp prime times the aspect ratio W by L. So this is the MOSFET transconductance parameter or the transistor transconductance parameter for a p-MOS transistor.
ओके, लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक, और उसके ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं.